India's beauty consumers are shifting fast, and perfume as a category is booming. Today, we are breaking down what it really takes to build a perfume brand in India, from idea to execution. And to do that, we are joined by Shashank, founder of EM5, a fast growing Indian fragrance brand. Shashank, thank you so much for joining us. Thank you for having me. Yeah. So let's start from the beginning. And पहला question ये है कि whenever someone wants to start a company, any kind of, so उनका सबसे पहला question होता है how much money do I need? So realistically, how much capital does someone need to start a perfume brand in India today? I believe money is not should not be the criteria. Uh, I started my company out of maybe I believe 5 lakh rupees or so, not more than that. Mhm. So it's not about how much you are able to invest in the company. It's more about how you are going to spend whatever money you have with you. I believe knowledge plays an important role rather than money. See, there are a lot of people out there with a lot of money, all the VCs and everything. They need people to run the company, right? So money is not the driving factor, and it's not like that as well that every company which has been funded well or which has a lot of money with them does really well. It's not important that they do good out there. So money is a secondary factor. I believe it's celebrated well. मतलब अभी आप देखोगे तो it's celebrated on LinkedIn and everywhere, funding वगैरह वगैरह, and the kind of money you are pouring into the category or into the market with your business and everything. But I believe it's not a factor. मतलब not at all. Money should not be the factor. 50,000 rupees is good to start a business. Got it. So I saw your pitch on Shark Tank India, and you actually left everyone surprised. Matlab from cybersecurity, then going into other ventures, running successful ventures, and then you built EM5. So why did you choose perfume category? What was the original vision? There was no vision. I am still running out of my interest into the category itself. It's like till date, I am doing the moment I'll do and I'll start doing any business, I lose. I am not doing any business or whatever I am doing is out of personal interest and hobbies, and that's Right. why I believe I am able to do good in whatever I do. As in like because I don't choose to do business, I choose to chase my interests and hobbies, and Right. everybody should do it like this only. They should not chase the category, they should not chase the trends. मतलब मैंने कहीं सुना था मतलब घास काटने भी जा रहे हो ना, आपको मजा आ रहा है अगर घास काटने में, तो इतनी बढ़िया घास काटोगे कि राष्ट्रपति भवन की जब घास कटेगी तो आपको बुलाया जाएगा कि आप आओ घास काटो हमारी. So Right. and it will be fun for you as well. So Got it. whatever you do it out of fun, do it out of your personal interest, do it out of hobby. हमेशा knowledge wins. So the kind of knowledge and exposure you get when you treat anything as a hobby will beat any formal education or any experience out there. You'll only be So able to work 18 hours a day, only will be able to work 18 hours a day if you are doing it as a hobby and out of personal interest. The true. market is so cluttered out there. Everybody is working 10 hours a day. If you want to beat them, you have to work 12 to 14 hours a day, 16 hours a day, 18 hours a day. You will only be able to do it because you love what you're doing. So it's important to love what you're doing. None of my business, right from IT to fish farming to whatever I do and whatever I'll be doing further in my life as well, will be chased by my personal interests and passion into it. Also, I see in perfume category especially, people step into it because they are passionate about it. So, like, is that a really necessary thing to have someone to be Now you need passionate to about understand perfume? there's a difference between having passion into perfumery and liking fragrances. Hmm. So if you Yeah. go out there and talk to 100 people, 90 of them are passionate about perfumes. Everybody likes Hmm. fragrances, right? Yeah. So there's a difference now, but nobody understands what really goes into a fragrance. All those fragrance influencers, if you see all those fragrance enthusiasts, if you go out there and ask them, just name 5 ingredients which goes into a perfume, they won't be able to name even 5 ingredients which goes into a perfume. So there's a difference between following something as a passion and liking something. Right. Like Yes. owing things, fleshing it off, and liking fragrances, liking anything, is one Okay. thing, and studying it,
penetrating into what really goes into building whatever product you are using or whatever hobby you are having is like deep dive आप जितना कर सकते हो, that is what matters. So unless and until you are not, so there's a difference between being passionate and liking something. So Liking something. so वो एक वेरिएशन आ जाता है वहाँ पे. So whatever people we see out there, they like fragrances. 90 Mm. out of 100 people like fragrances. They are not passionate about it. True, true. That is true. So, we are hearing a lot about how quickly the perfume space is growing. Hmm. And now hair perfumes are starting to come into the picture as well. So, what's your take on this particular hair perfume category? I don't think that's going to work because see, while the category is rising, you will Hmm. find fragrances everywhere, right from body lotions to body wash to any product, as in like fragrance will be attached to it. Correct. Yeah. Why? Because the category is growing, so everybody's giving it a try in terms of different use cases. So, Okay. for example, we introduced solid perfume in India. So, that was one of the use case key. Okay, you can have a Mhm. perfume in a solid form as well. Now, there are, if you see there, so Bath and Body Works and Body Shop and all these kind of brands usually are not functional in terms of ingredients. They are functional in terms of the fragrance which they're using. Of Right. course. They have Yes. a range of products which are differentiated using the type of fragrance which is there. Not with Mhm. respect to इसमें विटामिन सी है या इसमें नियासिनामाइड है या इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है या कोजिक एसिड so on and so forth. So they are not functional in terms of ingredients. They are functional in terms of the fragrance type. तो बाथ एंड बॉडी के अंदर वो चीज ऑलरेडी आ चुकी है. नाउ व्हाट इज रिमेनिंग, नाउ यू विल सी हेयर परफ्यूम्स आउट देयर. So it totally depends on how market accepts it. I believe with the kind of sensitivity consumers are having with respect to their hair and the kind of products which they use on their hair, using a perfume on their hair will be a concern for a lot of users out there. And it is technically attached as well because perfumes cannot be created without IPM. As in like if you're getting into non-alcoholic fragrances, then you'll be using water, and that has to be blended with some emulsifier out there. So that has to be either propylene glycol or isopropyl mystrate or any one of them, which is kind of oily in nature or very hydrating. So आपके बालों का टेक्सचर उसकी वजह से चेंज होता है. And perfume in itself is oil based, so not everybody likes to use oil on their hair, yeah, any element which contains oil on their hair. And if the concentration is very less, it doesn't even matter, वो 5 मिनट तक खुशबू आएगी उसकी और फिर चला जाएगा. And if you increase the concentration, the oiliness of it increases. तो Okay. technically भी एक foundation है as far as perfumes are used, and the final formulation के अंदर भी foundations हैं. So I believe users won't be able to, and if you are using getting into alcohol based, then alcohol will make your hair dry. And the kind of ingredients which are used in perfumes, IFRA के हिसाब से अगर आप देखोगे तो the kind of approvals which are there from IFRA for the products which are to be used in hair, on hair, उसके अंदर there are a lot of complications. उसके बहुत clear instructions हैं नहीं, और जहाँ पे हैं भी वहाँ पे the quantity of ingredients which you can use in the perfume which is to be used on hair is very less. तो जहाँ पे स्किन या क्लोथ के ऊपर आप 2% को इंग्रेडिएंट यूज कर सकते हो, तो बालों के लिए वो 0.5% तक लिमिटेड है. तो वो फंक्शनल रहेगा भी नहीं, आप लगा भी लोगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा. एक गिमिकी कैटेगरी क्रिएट करना है तो वो वेव आएगी और वेव चली जाएगी. ऑल दिस ब्रांड्स, बड़े ब्रांड्स हैं, ज़ारा कुछ भी लॉन्च करेगा, पीपल आर गोइंग टू बाय इट बिकॉज इट्स अ ट्रेंड. इन्फ्लुएंसर्स उसको प्रमोट करेंगे, कंपनी उसको पुश करेगी, बट इट वोंट बी a day to day kind of a product later. 2 साल बाद आप देखोगे तो you won't find it in shelves with people. Yeah, people won't be using it on everyday basis. They won't be repeat buying it. Hmm. Yeah, this clears a lot of things. So, like Indian consumers are, as we talked, very particular about like what products they're buying, and Hmm. also they are wary of words like chemicals. So, Hmm. what have you learned about like how Indians actually choose perfumes? Is there a knowledge gap still? A lot of knowledge about that. Okay. Yeah. Very interesting question, as in like I'm glad you asked it. So Indian consumers or brands basically chase marketing, Oh, right? yeah. Everybody wants to chase marketing. Everybody True. wants to have one of their USP out there कि यार हमारा USP क्या है. उनको नहीं पता है बैकएंड में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है. उनके पास में फंड्स हैं, या तो उन्होंने कुछ इन्वेस्टर से फंड्स ले लिया है, या तो दे हैव देयर ओन मनी एंड दे स्टार्टेड समथिंग आउट ऑफ,
ठीक है हम परफ्यूम बिजनेस में एंटर करते हैं। नाउ दे चेस कि हमें करना क्या है अब, क्योंकि हमें पता तो है नहीं परफ्यूम फॉर्मुलेट कैसे होता है या इसके पीछे की स्टडी क्या है, चलो पता भी है तो भी हम चाहेंगे कि हाउ वी कैन सेल इट। सेलिंग प्रोपोजिशन इज प्राइमरी, राइट? तो हमें सेलिंग प्रोपोजिशन ढूंढना है। अब उसके अंदर यू विल फाइंड मल्टीपल कंपनीज दीज डेज कमिंग अप विथ नेचुरल परफ्यूमरी, या वो नेचुरल तो बोल नहीं सकते टेक्निकली, सो दे कॉल इट क्लीन परफ्यूमरी, or they use some kind of words like these to to convince the customer or the consumer that they are harmless, or they are not using chemicals and those kind of spray. Right. Even in branded fragrances यार, if you see, आप कोई भी बॉटल उठा के देखना, उसमें Okay. पीछे लिखा हुआ होता है नेचुरल स्प्रेयर। Okay. या ठीक है, नेचुरल Okay. स्प्रेयर। नाउ दैट डजंट मीन दैट द ingredient in the bottle are natural. It means Okay. that the pump which you are using is not using any external force to Oh. spray the fragrance out of the bottle. Mm. ये आपको इंटरनेशनल ब्रांड्स में मिल जाएगा। इफ यू सर्च ऑनलाइन नेचुरल स्प्रेयर रिटन ऑन बॉटल्स, यू विल फाइंड हेल लॉट ऑफ इंटरनेशनल ब्रांड्स। मतलब आई डोंट नो, बट हाँ, आपको टॉप ग्रेड ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ मैं, यूरोपियन टॉप ग्रेड ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे विथ हैविंग नेचुरल स्प्रेयर रिटन ऑन देयर बॉटल। दैट मीन्स दैट द Mm. स्प्रेयर इज नेचुरल, लाइक यू प्रेस इट एंड इट, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स व्हिच इज यूज्ड टू स्प्रे द लाइक द परफ्यूम आउट ऑफ द Right. बॉटल। ये उसके लिए लिखा Understood. हुआ है, इट डजंट मीन कि उसके अंदर का जो परफ्यूम है वो नेचुरल है। And if we talk Mm. about in comparison to synthetic versus naturals, I believe synthetics are way far safer than naturals because they are formulated in a pattern. Mm. Not, and now not all synthetics are safe. There are Mm. again, and in the same way, not all naturals are safe. You will be surprised to know, जैसे bergamot है, bergamot is Mm. lemon का एक type होता है. Yeah. So if you use pure bergamot oil, it will give you sunburns. Okay. If you apply it, you go out and you'll have a sunburn in there. If you Mm. use pure rose oil, now rose तो हम बचपन से यूज करते आ रहे हैं, प्योर रोज ऑयल, लाइक कोई इसमें दो राय है ही नहीं कि सबसे बढ़िया होता है। हाँ प्योर जी। रोज ऑयल इज कार्सिजेनिक। उसमें एक एलिमेंट होता है जिसको बोलते हैं इथाइल यूजेनॉल, विच इज ओके। मोर देन 2% इन प्योर रोज ऑयल, दैट इज ओके। कार्सिजेनिक। हाँ। तो आईएफआरए के हिसाब से, एज पर द इंटरनेशनल फ्रेग्रेंस रेगुलेटरी एसोसिएशन, यू कैन नॉट यूज प्योर रोज ऑयल मोर देन 2% in your fragrance हाँ। because that हाँ। is then carcinogenic. Now, when it comes to the synthetic molecule content, like molecule structure of the pure rose oil, जो synthetically produce किया गया है, उसमें से उस particular molecule को remove कर दिया गया है। तो टेक्निकली सिंथेटिक रोज ऑयल को आप 5, 7, 8% तक भी इस्तेमाल कर सकते हो सेफली, प्योर को नहीं कर सकते हो, एंड दे विल स्मेल द सेम। राइट। तो उसके सिर्फ देयर आर 32 मॉलिक्यूल्स इन रोज एसेंशियल ऑयल, उसमें से उन मॉलिक्यूल्स को हटा दिया गया है जो कि आपके लिए हार्मफुल है। The synthetic version is way far safer than the natural. अच्छा। हाँ। Same goes with hell lot of ingredients, and then you can further study them better because the consistency is there. आप सिंथेटिक राइट। मॉलिक्यूल्स को जब मतलब फॉर्मुलेट करते हो, या आप किसी भी एक एकॉर्ड को या किसी भी एक ऑयल को, किसी भी फॉर्मुलेशन को जब आप बनाते हो, यू एग्जैक्टली नो व्हाट इज गोइंग इन देयर एंड यू कैन कैलकुलेट इट। तो आप उसके फॉर्मुलेशन को पूरी तरीके की कौन सी चीज कितनी हार्मफुल है कितनी नहीं है, एंड देन यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंगली, कम ज्यादा कर सकते हैं। नेचुरल में ये सब नहीं करा जा सकता है बिकॉज व्हाट यू गेट इज द फाइनल प्रोडक्ट। आप उसमें सब कैसे निकालोगे, वो तो ब्लेंड हो चुका है, नेचर ने ब्लेंड करके दिया है आपको। राइट। राइट। तो लॉट ऑफ नेचुरल्स आर नॉट सेफ, बट तो सिंथेटिक्स इट्स अप टू यू टू मेक इट सेफ। नाउ इट्स अप टू योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यू यूज द सेफ सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स। राइट। नेचुरल्स में आपके हाथ में नहीं है, आप रोज नहीं यूज कर पाओगे 2% से ज्यादा अगर आपको नेचुरल यूज करना है। सेकेंडली, अब और आ जाते हैं, अब इसके अंदर और डीप डाइव करते हैं, तो फिर एनवायरमेंटल कॉजेस वगैरह को हम कंसिडर करें अगर, सो नाउ इट टेक्स 4 tons of roses to produce 1 kg of rose oil. Now imagine how much you are investing in getting what out of it. 4 टन आप गुलाब उगाओगे 1 किलो रोज ऑयल के लिए, आप उस उतनी मेहनत में क्या कुछ नहीं उगा सकते हो जो कि अदरवाइज कहीं काम आ सके। दूसरा और आ जाते हैं, अगर सिंथेटिक की बात करें नेचुरल, उसमें आईएफआरए सो कंसर्न अबाउट नेचर कि इफ एनी ऑफ द इंग्रेडिएंट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल और इज नॉट सेफ फॉर द एनवायरनमेंट, वो उसको भी बैन कर देते हैं। ओके। तो ह्यूमंस के लिए सेफ नहीं है वो तो अपनी जगह हो गया, बट अगर एनवायरनमेंट के लिए भी सेफ नहीं है,
तो वो भी बैन कर दिया जाएगा आईएफआरए के साथ द्वारा. सो इफ यू आर फॉलोइंग आईएफआरए, यू आर थ्रू, यू आर सेफ आउट देयर. नेचुरल सिंथेटिक कोई फर्क नहीं पड़ता है. नेचुरल भी हार्मफुल है, सिंथेटिक भी सेफ है. देर इज आईएफआरए है वहां पे, वो लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतने सारे इंग्रेडिएंट्स की लाइब्रेरी है उनके पास में. यू गो आउट देयर, हर कैटेगरी का उसके अंदर उन्होंने लिमिटेशन बना के रखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके फॉर्मुलेशन में रोज ऑयल है, देन स्टे ऑन एंड रिजन ऑफ. तो रिजन ऑफ इज लाइक बॉडी वॉश, आप लगाते हो धो लेते हो, तो उसका परसेंटेज अलग डिफाइंड है. स्टे ऑन इज लाइक अ परफ्यूम, इट स्टेज ऑन योर स्किन, तो उसका परसेंटेज अलग डिफाइंड है कि हाउ मच यू कैन यूज इन योर फ्रेग्रेंस. So if you are following IFRA guidelines, it's through. So you should always buy fragrances from companies who follow IFRA guidelines. इंडिया में इट्स नॉट रेगुलेटरी, एज लाइक इट्स नॉट बाय लॉ इम्पोज्ड. ठीक है, इंडिया में बाय लॉ इसको इम्पोज नहीं किया गया. ये कंपनीज के अपने कंसाइंस पे है कि इफ दे वांट टू यूज इट और नॉट. सो फॉर एग्जांपल, while we are concerned, we use IFRA compliant ingredients and fragrances only. So जैसे लिलियाक हो गया, लाइलैक हो गया, these kind of ingredients we stopped using 4 years back. तो परफ्यूमरी में वो जो भी कंपनीज हैं जो आईएफआरए फॉलो कर रही है, 4 साल पहले वो इंग्रेडिएंट्स हट चुके हैं उनके फॉर्मुलेशंस में से. इसी वजह से आप देखोगे तो जो इंटरनेशनल ब्रांड के वो भी होते हैं, पुरानी बैचेस अलग स्मेल करती है, नई बैचेस अलग स्मेल करती है. 10 साल पहले जो परफ्यूम जैसा स्मेल कर रहा होगा, शायद आज जो वो बैच बनेगी वो वैसी स्मेल नहीं कर रही, क्योंकि 10 सालों के दौरान कई सारे इंग्रेडिएंट्स बैन हो चुके हैं. तो इट्स So ऑल more अबाउट, or या less, रिलाई ऑन कंपनीज हु आर यूजिंग आईएफआरए गाइडलाइंस, बाकी सब मार्केटिंग है. yeah, exactly. If someone is saying it's natural, it's gimmick. If That's it. even they are saying natural and they are not following IFRA, it's not safe for you. And if Right, they're saying right. they're 100% synthetic and they follow IFRA, it's 100% safe for you. Okay, right, right. So perfume quality also depends on sourcing a lot. So A like, lot. how did you figure out So what's the right there are, I manufacturing? tell you, sourcing, matlab, there can Yes. be a 1 hour debate on from where to source what. But in a Okay. nutshell, I'll tell you there are four companies I would say Mhm. globally, which dominate the fragrance ingredient industry. Okay. If you want to know the names of them, that is Firmenich, Givaudan, IFF, and Mane. Okay. ऑल ऑफ दीज कंपनीज आर, इसमें से जो सबसे नई कंपनी होगी वो भी शायद 100 साल पुरानी होगी कम से कम भी. Mm. ठीक है. Okay. थ्री ऑफ देम आर, मतलब ऑल ऑफ देम आर बेस्ड इन फ्रांस मेजरली. Mhm. Right. बाकी दो तीन कंपनियां तो ग्रास एक ही रीजन में है, ग्रास में, लाइक Okay. ग्रास इज द नेम ऑफ दैट प्लेस. तो ग्रास में ही है वो सारी कंपनीज, मतलब तीन कंपनीज तो वही है. सो दीज कंपनीज बेसिकली डोमिनेट द फ्रेग्रेंस एंड इंग्रेडिएंट का वो सब कुछ ग्लोबली. सो इफ यू आर Okay. सोर्सिंग फ्रॉम देम, यू आर सोर्सिंग फ्रॉम द सेम कंपनी जहां से लुई विटॉन भी बन के निकल रहा है, जहां से टॉम फोर्ड भी बन के निकल रहा है, जहां से बाकी सब चीजें निकल रही है. एंड दीज आर द Mm. कंपनीज हु फॉर्मुलेट फॉर दीज काइंड ऑफ ब्रांड्स एज वेल. देयर परफ्यूमर्स ओनली फॉर्मुलेट. सो लेट्स से अरमानी की कई फ्रेग्रेंसेस मान बनाता है, कयाली की कई फ्रेग्रेंसेस मान बनाता है, टॉम फोर्ड की फ्रेग्रेंसेस लुई विटॉन ने बनाई हैं. अब उनका तो Mhm. फैमिली कनेक्शन भी है, बिकॉज थोड़ा सा पीछे से किलियान की फ्रेग्रेंसेस अगेन आउट ऑफ द फैमिली कनेक्शन. तो किलियान इज LVMH, लुई विटॉन, मोइट, हेनेसी. में जो हेनेसी है, दैट इज हेनेसी का जो लिक्योर आता है, ब्रांडी, Mhm. ब्रांडी, दैट इज किलियान के चाचा. तो किलियान इज Oh, किलियान हेनेसी. तो किलियान इज right. दैट परफ्यूम ब्रांड, इज लाइक ब्यूटी एंड परफ्यूम ब्रांड, तो वो फैमिली कनेक्शन है. फिर लुई विटॉन के परफ्यूमर्स हैं जैसे फ्रांसिस कुर्जिया. तो फ्रांसिस कुर्जिया का खुद का एक परफ्यूम हाउस है, बट ही आल्सो ब्लेंड्स फ्रेग्रेंसेस फॉर लुई विटॉन एंड टॉम फोर्ड एज वेल. तो अगेन द इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम फर्मिनिश ओनली. तो ऐसा कनेक्शन है, मतलब एवरीथिंग इज, मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग कनेक्ट. तो ये चारों कंपनियों के बीच में ही पूरी कहानियां चलती है Mhm. मेजरली. So if you know these things, if you know the connections, and then if you have the right contacts. क्योंकि इसमें Mm. ऐसा नहीं, यू जस्ट गो आउट देयर फर्मिनिश के पास and मुझे ये इंग्रेडिएंट दे दो या ये चीजें दे दो, और वो आपको उठा के दे देंगे. Possible. No. No. So there are captive ingredients as well then. तो captive मतलब then those ingredients are not sold out there. So for example, Mhm. Tom Ford comes out with a fragrance X by Tom Ford, and Mhm. there is one ingredient which is used in X by Tom Ford which makes it very different. So Tom Ford will ask Firmenich या any company जिससे भी वो ले रहा है to make that Mhm. ingredient captive, कि अब वो किसी को भी नहीं देंगे. That ingredient Right. is limited to be used by Tom Ford for that X fragrance only.
Now you cannot replicate because you don't even know what that ingredient is. Right. So that's how they get that USP. And they sign contracts की 3 साल तक, 4 साल तक, 10 साल तक, is like depends on how they want to process it. इनको बोलते हैं Understood. active ingredients. So it's Okay. all lot. फिर नेचुरल्स में आ जाते हैं फिर जैसे अमवाज है तो अमवाज के पास में अमवाज का एक फ्रेग्रेंस आता है इंटरलूड करके, उसके अंदर Mhm. वो लोग उसका यूज करते हैं जो वेल वॉमिट होती है, एम्बरग्रीस बोलते हैं जिसको. So they use the real essence of it, the original. Yeah. Now they have a limited stock of it. So there can be only a limited number of bottles which can be produced of that particular fragrance because it's using that natural compound which is available in a limited quantity. Now that ingredient is illegal in India. You cannot source it, you cannot use it because endangered species का byproduct है वो Right. whales का. बट वो लोग कतर में बैठे हैं तो वहां पे वो लोग इस्तेमाल करते हैं. Mm. ऐसा है तो वो फिर रीजन वाइज भी वेरी कर जाता है, आप कहाँ हो तो क्या इंग्रेडिएंट यूज कर सकते हो. नाउ मस्क की बात करें Mm. तो द रियल मस्क तो रशिया में देर आर अ कपल ऑफ फार्म्स हु डू डियर फार्मिंग फॉर दैट मस्क Okay. लीगली. Okay. अपने यहाँ तो यू कैन नॉट एट ऑल, मतलब विल बी जेल्ड. तो रियल मस्क तो इस्तेमाल करा ही नहीं जा सकता. बट देन देर आर परफ्यूमर्स हु आर एबल टू सोर्स दैट रियल मस्क फ्रॉम Mm. रशिया to the country where it's not illegal, and there they blend those fragrances Mm. using that real Mm. musk. तो इंग्रेडिएंट्स का तो बहुत बड़ा मतलब इंग्रेडिएंट्स इज एवरीथिंग, मतलब परफ्यूमरी में इंग्रेडिएंट्स इज एवरीथिंग. So, if anyone who doesn't have these many connections and he's just starting out in the industry within India itself, are there any places where he or she can source these ingredients? हाँ, there are many places. मतलब Mhm. you can source from Firmenich as well. Yeah? You go out there, you talk to them. If you Mhm. sound good enough to them, they are there to sell ingredients. They just want to make sure that they are handing it out to people who are able to use them right. Okay. Yeah. Right, those are expensive stuffs, and at times those are rare stuffs. They don't want. And then obviously अगर आपको मेन स्ट्रीम फ्रेग्रेंसेस बनानी है तो फिर आपको लोकली मिल जाएगा, मतलब कहीं भी मिल जाएंगे इंग्रेडिएंट्स. तो लेट्स से इफ देयर आर 4,000 ingredients which are used in perfumery, 1,000 ingredients are available in the local market. आप गूगल पे जाओ, सर्च करो, मिल जाएंगे आपको. 1,000 ingredients are there for which you need some contact to Mhm. procure them. या वो बहुत महंगे हो जाते हैं या उनका एमओक्यू बहुत ऐसा. अब जैसे एक इंग्रेडिएंट होता है उसको बोलते हैं जियोस्मिन. ना Okay. जियोस्मिन इज लाइक 3.5 लाख रुपीस फॉर 10 ग्राम्स इज द कॉस्ट. Mhm. अब आप किसी के पास जाओगे तो इफ दे डोंट नो यू, वो आपकी इंक्वायरी को झाड़ देंगे कि ये कौन जियोस्मिन लेने आ गया, Ah. 10 ग्राम का क्या करोगे. राइट. Mhm. सो दे नीड टू यू नीड टू बी कन्विंसिंग इनफ टू देम कि दे टॉक टू यू कि ओके जियोस्मिन चाहिए, क्यों चाहिए, क्या करना है. Mhm. हम विल चेक कि आप मिसयूज तो नहीं, मतलब मिसयूज इन द सेंस वेस्ट ना हो जाए. इट्स एन Ah. एक्सपेंसिव स्टफ. तो वेंडर भी ध्यान रखता है कि यार आप हमसे जो ले रहे हो वो आप गलती से कहीं वेस्ट कर दोगे तो नुकसान हो जाएगा आपका. Mhm. या हम Yeah. मिनिमम 100 ग्राम दे सकते हैं, दैट इज 35 लाख रुपीज. तो फिर खरीदने वाले को भी सोचना है कि यार मैं इतना प्रोक्योर करूं या ना करूं. ऑल्दो जो परफ्यूम इंडस्ट्री में आता है वो इतना डीप नहीं जाता है. दे डोंट गेट इनटू फॉर्मुलेशंस. दे गो टू थर्ड पार्टी परफ्यूम कंपनीज. दे गेट फाइनल ब्लेंड्स आउट ऑफ इट. हम लोग थोड़ा घुस गए इन सब चीजों के अंदर आउट ऑफ, अगेन एज आई सेड, इफ यू आर यूजिंग डूइंग इट एज अ हॉबी, यू वांट टू यू नो डीप डाइव इनटू व्हाटएवर यू आर डूइंग. Right. तो वी हैव मतलब वी हैव डाइव्ड इनटू इट प्रीटी डीप. बट हाँ, यूजुअली आप किसी भी दूसरी परफ्यूम ब्रांड को या कंपनी को इतना डीप डाइव करते हुए नहीं देखोगे बिकॉज इट्स नॉट नीडेड फॉर देम. जरूरी नहीं लगता उन Mhm. लोगों को करना. बट हमें लगता है कि द काइंड ऑफ ब्लेंड्स वी आर एबल टू क्रिएट लाइक अघोरी भैरव, वो हम नहीं कर पाते अगर हम लोगों के पास में इतना एक्सपोजर नहीं होता तो. And then these kind of blends are the blends which create an identity for you. So rather than marketing, rather than getting into those marketing promotions या वो जो होता है ना ब्रांड परसेप्शन वाली जो चीजें होती है, उन सब में हम लोगों ने पैसा नहीं खर्चा किया, हम लोगों ने कहीं नहीं किया. हम लोगों ने प्रोडक्ट्स कुछ ऐसे बना दिए जो अपने आप में एक ब्रांड बन गए. Yes. Yeah. आज भी EM5 का कोई मतलब नहीं है, मतलब. I saw like it said on Shark Tank India, "Am I smelling good?" हम्म. That was the only tagline. So राइट. yeah. Yeah. So
perfume is actually, I feel, is tougher to sell online because you can't smell it, right? हाँ, So what actually worked for you to build the trust and get people to buy AM5? what worked for us is we, I believe, अब ये प्लान नहीं था, it was not Mhm. pre-planned at all, but what we did was we started educating people in terms of Mm. what a perfume is. So rather than getting into aspirational and fantasy based marketing, we focused on getting into functional marketing. So Mhm. rather than tell, आपने अभी जितने भी परफ्यूम एड्स देखे होंगे, आप हमेशा देखोगे कि कोई ऐसे स्मार्ट सा लड़का आ रहा है, सूटेड बूटेड एंड स्टफ्स, पार्टी में से 5 स्टार होटल में से निकल के आ रहा है और बड़ी गाड़ी में बैठ के जा रहा है, एंड देन दैट परफ्यूम बॉटल Mhm. कम्स। या तो कोई हॉट सी लड़की आएगी, वो ब्यूटीफुल सी, वो कोई परफ्यूम लगाएगी, एंड देन देयर इज अ थीम टू इट, राइट? सारा एस्पिरेशनल और फैंटेसी बेस्ड Yeah. मार्केटिंग। सो एक ये तरह का मार्केटिंग था। एंड ऑब्वियसली इस तरह के मार्केटिंग के अंदर यू कैन ओनली सेल ड्रीम्स, you cannot sell Mm. functionality. What we sold always was experiences. Now, Yeah. to sell an experience online, I need to tell you in words how it would smell like, what you will feel about it, and some technical parts as well, ताकि आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिले। अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट इट, ऐसा एग्जांपल लो, आप को मैं एक दाल मखनी खिलाता हूँ, ठीक है, आई जस्ट प्लेस दैट दाल मखनी इन फ्रंट ऑफ यू, यू ईट इट, आप बोलोगे अच्छी दाल मखनी थी, बट देन आई टेल यू a स्टोरी अबाउट दैट कि इस दाल मखनी का नाम है दाल बुखारा। इसको रात में बनाना चालू किया जाता है, ये सुबह सर्व होती है, मतलब सुबह रेडी होती है, 6 घंटे लगते हैं इसको बनाने में। इसको बनाने का तरीका ऐसा ऐसा होता है, इसको कोयले की राख पे बनाते हैं, इसको तांबे या पीतल के देग के अंदर बनाया जाता है, और इसमें इतने मसाले डलते हैं। नाउ आई टोल्ड यू द स्टोरी, नाउ यू आर एक्साइटेड अबाउट इट, सो व्हेन यू ईट दैट दाल, तो आप बोलोगे हाँ स्मोकी फ्लेवर आ रहा है, अभी तक नहीं आया, Mm. बट नाउ यू नो इट, यू विल बी एबल Yeah. टू डिटेक्ट इट। तो अब आप एक्सपीरियंस कर रहे हो उस दाल को, यू आर नॉट जस्ट हैविंग अ दाल एज अ फूड, you Mm. are having a food with an experience of it. So it's an experience attached to you being, you eating a food. So it's the same with the Yeah. fragrance. So either a fragrance will smell good on you, or it will deliver an experience, is the whole difference out there. Yeah. खुशबुएं सारी अच्छी स्मेल करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। Mm. अनलेस until I am not able to deliver an experience out of that fragrance, कि आप उस बारे में सोचो कि हाँ ये चीज है, तो अगर आप अघोरी अगर स्मेल करोगे, अघोरी आप लगाओगे, तो इट्स नॉट Mm. जस्ट अ फ्रेग्रेंस, इट्स एन एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। Yeah. उसमें आपको राख के वो आएंगे, सो द नेम इन इटसेल्फ डिनोट्स कि सुनो आप ये लगाओगे तो आपको अघोरी जैसा एक्सपीरियंस होगा। सो Mm. all of our fragrances are delivering some experience out there. There is a connection to an experience because what we are selling is a sense. जैसे आपने जब दाल बुखारा खाया, so it's a sense of taste. Mm. Unless Yeah. and until your mind connects to that sense, you won't be able to enjoy it. Mm. It's just a food, अच्छा टेस्ट करने वाला फूड, जो हर हर फूड अच्छा टेस्ट करता है। It's just another good tasting food. सो इस तरीके से हमारी फ्रेग्रेंसेस विल बी जस्ट अनदर फ्रेग्रेंस विच इज स्मेलिंग गुड, इफ इट डजंट डिलीवर एन एक्सपीरियंस। म्यूजिक है, अगर मैं आपको म्यूजिक सुनाऊं, ऐसा ही म्यूजिक सुना दूंगा कोई भी, तो वो हो जाएगा, बट मैं आपको बताऊंगा ये म्यूजिक को इस तरीके से बनाया गया है, इस लिरिक्स का मतलब ये होता है। आपने देखा होगा, वंस यू अंडरस्टैंड द लिरिक्स, दैट म्यूजिक इज मोर एंजॉयबल, Right. अदरवाइज इट्स जस्ट द सेंस ऑफ हियरिंग। Mm. So fragrance is also a sense. You have to deliver an experience with the sense to make it more enjoyable. The sense of touch, sense of taste, sense of smell, sense of vision, sense of ears. अब मैं आपको पहाड़ दिखाऊंगा, देखो पहाड़ है कैसे लग रहे हैं, आप बोलोगे अच्छे लग रहे हैं, मतलब वो वाला हिमालय है, और वो वाला जो पीक है वो माउंट एवरेस्ट है। नाउ योर होल एक्सपीरियंस चेंजेस ऑफ लुकिंग एट दैट माउंट एवरेस्ट। Yeah. नाउ बिकॉज नाउ यू नो व्हाट इज गोइंग बिहाइंड। Mm. इंटरनल मीन्स यू डोंट नो व्हाट गोज बिहाइंड इट। आपका दिमाग उस एक्सपीरियंस को जनरेट नहीं कर पाएगा, पिक्चराइज नहीं कर पाएगा, सोच नहीं पाएगा उस बारे में। सो आई Yeah. वांट टू गिव यू मोर थॉट्स, and Mm. that's how we tell the stories of our fragrances, to deliver thoughts, and then we blend the fragrances to match with those thoughts. या तो ऐसा हो सकता है हर फ्रेग्रेंस में एक स्टोरी होती है। अब मैं एक फ्रेग्रेंस Mm. बनाऊं जिसका नाम मैं रखूंगा XYZ अमाल्फी कोस्ट। अब ये Okay. आपको अमाल्फी कोस्ट की फील देगी, यार भाई कोई नहीं गया अमाल्फी कोस्ट, मैं भी नहीं गया, आप भी, मतलब मुझे नहीं पता आप गए हो कि नहीं, मैं तो नहीं गया, मैं नहीं जानता किसी को भी जो गया हो, क्या एक्सपीरियंस लेगा वो नहीं पता। Mm. या तो लेके चलो फिर वहां सुंगाओ, तो हम बताएंगे कैसा लग रहा है। सो Mm. आई वोंट, माई माइंड विल बी एबल टू कनेक्ट इट, बट अघोरी से हम कनेक्ट हो जाएंगे, Mm. राइट? बार्बर शॉप से हम कनेक्ट हो जाएंगे बिकॉज वी हैव लिव्ड इट इन नॉस्टैल्जिया। हमने हमारे फादर्स को शेव करते देखा, और वहां उनके आसपास घूमते तो खुशबू आती थी हमें, Yes. हम उस एक्सपीरियंस में जाएंगे। भैरव हम एक्सपीरियंस कर लेंगे, क्योंकि हम काली के मंदिर में अगर गए होंगे, भैरव के मंदिर, देयर इज एन डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर।
to enter those kind of temples which are more into tantric than mantra. थोड़ी अलग वाइब होती है वहाँ की. Then Right. चंबल इज कमिंग. हमने सबने शोले देखी है, हमने सबने वो सब देखा है. वी कनेक्ट दैट वाइब ऑफ बीइंग लाइक चंबल वाला वाइब, डाकू वाला. मधुशाला इज अनदर फ्रेग्रेंस वी आर कमिंग अप विथ. So it's Yeah. the Okay. essence of that liquor shop. एक देसी liquor shop का क्या वाइब होता है? So it's inspired from हरिवंश राय बच्चन ने एक मधुशाला करके एक कविता लिखी है. I'm not sure अगर आपने उसको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा Yeah. है. पढ़िएगा, मजेदार चीज है वो. And it's not about promoting liquor or the drinking culture. It's about how it's about it's a deeper philosophy out there, and how small things and little things make you happy, and what happiness really means to somebody out there. तो when we go to, अब वो उसमें मधुशाला मतलब एक liquor shop को उसने एक एग्जांपल के रूप में लिया है कि when you go out there, chill with your friends, it's a different vibe altogether. Right. And we all have experienced it in bars and clubs and local liquor stores and stuff. So it's an experience of that. Then Kashmir is there. So Kashmir, हम सब ने पोस्ट कार्ड कश्मीर देखा है, राइट? सीन सीनरी देखी है, Yeah. रोमांटिक पहाड़ देखे हैं, हरे मैदान देखे हैं. हमने कभी रात का कश्मीर नहीं देखा है. जबकि हम रुके हैं, हम जब भी जाते हैं हम रात को भी रुकते हैं वहाँ पे. आज गूगल पे आप कश्मीर सर्च करोगे, यू विल फाइंड वेरी रोमांटिक प्लेसेस, यू विल फाइंड सीनरीज आउट देयर. बट एक लोकल आदमी से पूछो कि आपको कश्मीर कैसा दिखता है, वहाँ के आवाम से अगर आप पूछोगे तो आपके लिए कश्मीर क्या है, it's a different Kashmir as well. So nobody thinks about that Kashmir. Kashmir is about that. So elements connect हो जाते हैं. तो saffron is an element of Kashmir. Apple is an element of Kashmir. Plum is an element of Kashmir. But make it dark. रात में लेके आओ उनको तो वो अलग स्मेल करेंगे. It's not that, you know, pleasant anymore. And then talk about the struggle of people who are still very hopeful about Kashmir being heaven, and they fight every day to make it a heaven. Right. आर्म फोर्सेस, गवर्नमेंट, पीपल ऑफ कश्मीर. बट उनके पीछे कहीं ना कहीं एक सहमा हुआ डर है अभी भी. दैट एक्सपीरियंस ऑफ कश्मीर. तो ये सारी चीजें खुशबुओं में उतारी जा सकती है. बस किसी ने मेहनत करी नहीं. हर आदमी वो यूरोपियन लग्जरी में ही रह गया अभी तक. So, like, most important thing is rather than marketing saying we are natural, it's better to sell an experience. इट्स अ That, सेंस. इट्स अ सेंस. yeah, आप right. या तो आप ढाबा खोल लो, 50 ढाबे खुले हुए हैं. आप ढाबा Mm, खोल लो. आप अनलेस एंड अनटिल यू डोंट डिलीवर, आप क्यों जाते हो? आप किसी रेस्टोरेंट में क्यों जाते हो अगर आपके लिए वो फेवरेट? बिकॉज दैट रेस्टोरेंट इज डिलीवरिंग सम एक्सपीरियंस टू यू अदर देन द फूड. right. Yeah. Because you are going there for a same sense of taste. You want to Mm, develop that sense of taste with some imagination, with some mm, satisfaction more than just eating the food. mm, So smell is also a sense. You want to deliver more than just smelling good. mm, You want to deliver an experience, a nostalgia, a story, something, and not in words only, but in that smell as well. तो कहानियां तो हर फ्रेग्रेंस के पास में है, बट वो खुशबू उन कहानियों के साथ में जुड़ नहीं पाती है कभी. National. So, Indian consumers want premium. We have seen they want premium, but are very price sensitive. So, like, how did you tackle this in EM5 We didn't tackle it. pricing? Honestly, we didn't tackle it. Hmm. हमने Okay. कभी उस चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया कि हम महंगा बेच रहे हैं. वी नेवर रन सेल्स. हम लोग कोई दिवाली सेल, न्यू ईयर सेल कभी नहीं चलाते हैं. वी ऑलवेज कीप ऑनेस्ट प्राइजेस अक्रॉस द ईयर. कभी आपको हैवी डिस्काउंट्स कभी नहीं मिलेंगे. बाय वन गेट वन तो हम सोच भी नहीं सकते हैं कभी चलाना. Okay. Neither we focused on pricing. Our prices are like 4 times as expensive as any other mainstream brand out there. If you see, like, Hmm. any mainstream brand would be selling 100 ml for 500 rupees or so, right? We sell Hmm. 50 ml for 1000 rupees at an average. So we are 4 times as expensive as them. If you talk about barbershop and Agori, these are like 2000 rupees for 50 ml. That is eight Hmm. times that cost. We always Hmm. focus on delivering what we are delivering. Hmm. We never focused on. आप price में जाओगे, there is a different game altogether. You get into price war. फिर आप आपके फॉर्मुलेशंस को सस्ता करने का सोचोगे. अब जैसे Hmm. हमने कभी हमारी पैकेजिंग पे ध्यान नहीं दिया. अब मैं Hmm. नहीं बोल रहा हूँ अच्छी बात है, बट वो हमारा कंसर्न था ही नहीं कभी. बिकॉज आई एम नॉट योर इंटीरियर डिजाइनर जो आपका वार्डरोब को सुंदर बनाने में लगा हुआ है. Hmm. I am there to deliver an experience out of the sense of smell. That's my job. Hmm. I'll do that. So whatever money I'm spending, whatever you are paying for is for the juice inside the bottle, which when sprayed is going to deliver you what I want to deliver. Hmm. My job is not to make you feel happy looking at the bottle. क्या सुंदर bottle है यार, कितना heavy cap है, क्या करेंगे भाई सुंदर bottle और heavy cap का.
and the consumer don't want to pay for it. So why not invest that money or that cost into the real juice which is getting into the bottle? Why on the bottle or on the cap or on the packaging? हमारी bottles आज भी बहुत सिंपल है, हमारी पैकेजिंग आज भी बहुत सिंपल है. तो हमने इतने कॉम्प्लेक्स फ्रेग्रेंसेस जब डेवलप कर लिए तो पैकेजिंग तो हम कर ही सकते थे. पर हमने हमें अभी तक भी हमारी यही फिलोसॉफी है कि वी डोंट वांट टू वेस्ट ऑन पैकेजिंग, वी ऑलवेज वांट टू इन्वेस्ट ऑन द जूस व्हिच गोज इनसाइड द बॉटल, दैट मैटर्स. तो हमारे ऑडियंस आर वेरी सेंसिबल देन. Only those who understand this thing they buy from us. People who are still into that colonial hangover कि नहीं बड़ा ब्रांड है, पैकेजिंग अच्छी है, बॉटल अच्छी है, प्रेजेंटेशन अच्छा है, इन्फ्लुएंसर्स जिसकी बात कर रहे हैं, हमको वो बात करनी, वो करना है, तो देन यू आर बेसिकली यू आर बेसिकली, मतलब मुझे नहीं बोलना चाहिए ऐसा, बट अब वो मार्केटिंग गिमिक्स का शिकार हो चुका है कंज्यूमर, मतलब फिर. एंड हमें नहीं चाहिए वो कंज्यूमर. अब जैसे आप आओगे, आप बोलोगे 10% डिस्काउंट दे दो, देन आई विल बाय. यू आर नॉट आवर कस्टमर. इफ यू आर बाइंग आवर प्रोडक्ट एंड यू आर सीकिंग 10% डिस्काउंट, यू आर नॉट आवर कस्टमर. हमने बनाते टाइम नहीं सोचा है कि हम 10% कहाँ बचा लें. That is very fair. तो मैं सस्ते इंग्रेडिएंट यूज करने नहीं गया कभी भी कि मैं 10% कम कर देता हूँ प्राइस इस ग्रेड ए इंग्रेडिएंट की बजाय ग्रेड बी का यूज कर लेता हूँ तो कॉस्ट बच जाएगी. मैंने कभी वो मेरे फॉर्मुलेशंस में नहीं किया, तो मैं मेरी प्राइसिंग में भी नहीं कर सकता. Fortunately, there are a hell lot of sensible people out there who buy from us. Hell lot of sensible people. मतलब they understand perfumery. So हमारा customer is not somebody who uses perfumes as a commodity. हमारे customer is people who understands perfumes more than a normal guy out there, more than a normal perfume user out there. So once you upgrade your perfume game, you come to us. If you just started using perfumes, we are not your type yet. So just I had this practical question. So like if you had 50,000 rupees now for Hmm. marketing today, Hmm. how would you like spend it? Like ads, will you be going into ads or I'll sampling? just be honest to my Creating? customers, telling what I did and how I did it. Okay, In just those, the story. I'll come out there on like if in a very practical manner, I'll come on Instagram. Hmm. I'll make videos about what I did and how I did it. Hmm. मतलब I don't think उससे better कुछ हो सकता है. Those things work for us. Hmm. Influencer marketing is dead. Performance marketing is tricky. For anybody Hmm. out there, don't get into anything. Just come out there and tell your story. There are people who will believe in you. अब आपने कुछ भी सोचो, आप अगर ये भी बना रहे हो ना, आप बना रहे हो कि मुझे तो ऐसा ब्रांड बनाना है जिसकी बॉटल बहुत सुंदर है, यार देयर आर पीपल हु विल बाय इट. हर किसी के लिए कस्टमर है. देयर आर, आप 1.25 अरब की आबादी में रहते हो, तो देयर इज अ कस्टमर फॉर एवरीबॉडी आउट देयर. यू जस्ट टेल व्हाट यू आर बिल्डिंग एंड देयर आर पीपल हु वांट टू बाय योर स्टफ. 50,000 भी नहीं लगेंगे. Hmm. ऐसा नहीं, आई टेल यू, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू. मनी इज अ बाय प्रोडक्ट. Hmm. Money Hmm. is a byproduct. You'll build that company out of we. मतलब अमन सर से जो हमें फंडिंग आई है वो ऐसी की ऐसी रखी हुई है, तो हमने हाथ भी नहीं लगाया उसको. अच्छा. Hmm. हमारे लिए जरूरी था नॉलेज, तो उन लोगों उन्होंने Hmm. उन्होंने ही इज पर्सनली वेरी इन्वॉल्व विद अस. Other than Hmm. that, his team is also very much aligned with us. So whenever we need those kind of experiences, knowledge and connects and contacts जिसका हमें exposure नहीं था, so that like we are not brand people, हमें brand बनाते नहीं आता. Those people are an expert. Aman sir in himself and his team is expert in brand building. They are taking care of, they are helping us in brand building. Okay. Right? अब ये चीजें पैसे से नहीं आती. तो ये एक बड़ा गड़बड़ मामला है अभी अभी भी है कि अगर आप में स्किल्स है ना तो आपको पैसे की जरूरत नहीं है. मतलब जरूरत Hmm. है, बट ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं होगा, तो आप जितना होगा उतने 5,000 होंगे ना तो भी आप कर लोगे. Hmm. और स्किल्स के बगैर 5 करोड़ भी होंगे ना तो वो लॉस ब्लीड ही करेगी कंपनी, जो करती है लोगों की कंपनियां ब्लीड. Hmm. रनवे को एक वो बना लिया गया कि आपकी कंपनी का रनवे कितना है, मतलब कितने दिन चल पाएगी, उसको एक कॉमन टर्म बना लिया गया है. भाई नींद आना खत्म हो जाए, नींद आना बंद हो जाती है रनवे पे आ गए तो. लाइक EM5 डजंट हैव अ रनवे, टचवुड. हमारे पास कोई Hmm. रनवे नहीं, विल कीप ऑन गोइंग एज वी आर.
तो सस्टेनेबल कंपनी बनाना ज्यादा जरूरी है। भले ही छोटी बनाओ, सस्टेनेबल बनाओ, वो अपने आप ग्रो करेगी फिर। That अनसस्टेनेबल, वो नॉन सस्टेनेबल बड़ी कंपनी बनाने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हम्म, किसी न किसी दिन तो पैसा खत्म हो ही जाएगा ना आपका, अगर आप सस्टेनेबल नहीं हो तो उस दिन क्या करोगे? कितनी भी बड़ी कंपनी, हमने बड़ी बड़ी कंपनियां नीचे आते हुए देख लिया, और छोटी हम्म, छोटी कंपनियां आज अभी भी चल रही है। तो इट्स रादर देन मेकिंग अ बिग कंपनी, जो कल एक डिलीमा में बैठो कि अगर नया फंड नहीं आया तो हम क्या करेंगे या क्या नहीं हम्म, करेंगे वगैरह। उसकी बजाय तो छोटी कंपनी बनाओ, भले ही 20,000 महीना कमाओ, बट घर जाके पेट भर के खाना खाओ, चैन से सो, अगले दिन फिर दिन भर बहुत मेहनत करो, उसका मजा है। right, right, भूख भी अच्छी लगती है रात को, ज्यादा मेहनत करके जाते हैं तो। ज्यादा मेहनत जब करी जाती है जब पैसे कम होते हैं। जिनके पास पैसे ज्यादा होते हैं वो मेहनत कम करते हैं, खर्चा ज्यादा करते हैं, उनको भूख भी नहीं लगती, फिर नींद भी नहीं आती है। true, very true. Also, I saw the Instagram page. It's also very simple. Like you हाँ, come with a fragrance and you just educate. That's what I see. There is very different marketing going on नहीं with डिफरेंट other नहीं सही है, brands. हमारे इट्स वर्किंग फॉर अस। आई हाँ, बेट इट विल exactly. वर्क फॉर एनीबडी एल्स आउट देयर एज वेल। Hmm. कि Yeah. जस्ट बिकॉज अदर पीपल आर इन्वेस्टिंग सो मच मनी इन प्रोफेशनल वीडियोस Hmm. एंड स्टफ डजंट मीन दे आर राइट। Yeah, आई एम नॉट exactly. सेइंग दे आर रॉन्ग Exactly एज वेल, that point. बट मैं हाँ. भी जो कर रहा हूँ वो भी गलत नहीं, बट मैं वन थर्ड कॉस्ट में कर लेता हूँ यार। वन थर्ड भी नहीं, बहुत ही कम हाँ. है, मेरा तो खर्चा ही नहीं कुछ। आई स्टिल शूट वीडियोस फ्रॉम माय मोबाइल, सेल्फी कैमरा से या बैक कैमरा से, किसी से भी। मेरे पास कोई प्रोफेशनल कैमरा नहीं है, ना कोई प्रोफेशनल लाइटिंग। मैं मेरे ऑफिस में जब सब लोग चले जाते हैं उस जगह जाके ट्राइपॉड पे मेरा फोन लगा के 10 मिनट में वीडियो रिकॉर्ड करके नीचे आ जाता हूँ। आई ओनली एडिट इट, आई ओनली एड द सबटाइटल्स, आई ओनली पोस्ट इट, आई ओनली रन माय मेटा एड्स एज वेल। Oh. मेरे पास कोई एजेंसी भी नहीं, आई ओनली रन माय मेटा एड्स। Hmm. गूगल, आई नो माय बिजनेस बेटर देन एनीबडी एल्स आउट देयर। True. इतना ही समय, इससे ज्यादा समय मुझे किसी एजेंसी को ब्रीफ करने में लगेगा कि मुझे चाहिए क्या, Hmm. उसके ऊपर उनको पे भी करना पड़ेगा हेवीली, एंड देन आई हैव टू फाइट ऑन द रिजल्ट्स एज वेल, एंड देयर इज नो लर्निंग इन इट। हाँ. गलतियां मैंने भी करी, खराब वीडियोस मैंने भी बनाए, ऑडियो खराब आता था, ब्लर वीडियोस अभी भी डले हुए हैं, ब्लर वीडियोस। तो अभी भी बहुत अच्छे नहीं है कोई, बट हाँ आई नो हाउ टू मेक देम बेटर, बस थोड़ा सा टाइम कम हो जाता है अब। वी Hmm. आर वर्किंग ऑन इट, बट हाँ तो यू कैन डू थिंग्स बाय योर ओन, कोई जरूरत नहीं है। अभी हम लोग इस स्टेज पे कि अब तो हम वी कैन हायर अ प्रोफेशनल टीम फॉर वीडियोग्राफर्स एंड एवरीथिंग। बट मुझे Hmm. अच्छा लगता है यार, जैसा मैं करते आ रहा हूँ, आई डोंट वांट टू लूज ऑन माय रूट्स। तो जैसा मैं करते आ रहा हूँ वैसा करता रहूंगा, पीपल लाइक इट एज वेल एंड दे प्रीफर ऑनेस्टी। कंज्यूमर्स प्रीफर They're educated. या यू बी ऑनेस्ट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। नहीं अच्छा है ना, मना कर दो। वी ब्लंटली से हमारी फ्रेग्रेंसेज, इफ समथिंग इज वेरी बोल्ड एंड पोलराइजिंग, हम लोग ब्लंटली बोलते हैं कि ये पोलराइजिंग फ्रेग्रेंसेज स्ट्रॉन्ग है, अगर आपको नहीं पसंद इस तरह की फ्रेग्रेंसेज, डोंट बाय इट। Hmm. वी प्रीफर सैम्पलिंग, वी हैव सैंपल्स फॉर एवरीथिंग। यू बाय सैंपल्स Okay. फ्रॉम अस, you test and try them first, thereafter only you buy a bigger bottle. Okay. So we be very honest in whatever we are selling. कोई पूछना ये लॉन्ग लास्टिंग है, नहीं होता है, मना कर देते हैं, नहीं है लॉन्ग लास्टिंग। अच्छा. Yeah. तो हम वी नेवर, सो पीपल लाइक इट, मतलब Yeah. फिर हम जिसके बारे में बोलते हैं ना लॉन्ग लास्टिंग, तो हम पे बिलीव भी करता है फिर। हाँ. आई डोंट लूज अ कस्टमर, आई बिलीव आई नेवर लॉस्ट अ कस्टमर बाय सेइंग कि इट्स नॉट लॉन्ग लास्टिंग। Hmm. बस वो प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वो कुछ और खरीदता है फिर, जो लॉन्ग लास्टिंग होता है, जो हम सजेस्ट करते हैं, बिकॉज नाउ ही नोज दैट वी आर बीइंग ऑनेस्ट इन आवर फीडबैक्स। Hmm. अगर वो बोलेगा फ्रेश फ्रेग्रेंस बताओ जो 8 घंटे चलेगा, हम मना कर देते हैं, ऐसी फ्रेश फ्रेग्रेंस कोई नहीं होती जो 8 घंटे चलेगी, पॉसिबल ही नहीं है। सही. केमिस्ट्री के मतलब नियम, जैसे फिजिक्स के नियमों को नहीं बदला जा सकता, ऐसे केमिस्ट्री के नियमों को भी नहीं बदला जा सकता। Hmm. नॉट हैव अ फ्रेश फ्रेग्रेंस व्हिच विल लास्ट फॉर 8-10 आवर्स। तो ब्लंटली Okay. बताते हैं हम, तो वो ही मतलब उसको अच्छा लगता है। हाँ. तो कस्टमर भले ही नहीं बनाया हमारा, कल बन जाएगा। कल अगर उसको किसी और को लेदर फ्रेग्रेंस, या वो लेगा भी तो एटलीस्ट हिल बी सेटिस्फाइड कस्टमर, कि हमने उसको हाँ. बोला था 4 घंटे लास्ट करेगी। Hmm. तो ही जस्ट नो कि हाँ इन्होंने 4 घंटे बोला था, 4 घंटे चल रही है। Hmm.